वेलकम टू मिड ओडिया। बहुत दिन पर 20 मिनट डेरी 25 मिनट डेरी क्लास स्टार्ट है। देखा मुझे अपेक्षा करी केते पिला आज क्लास इंटरेस्टेड रोचंती। तो शीघ्र शीघ्र समस्त जॉइन करवा। लेट्स जॉइन। शीघ्र शीघ्र समस्त जॉइन करवा। लेट्स जॉइन द क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सीएचएससी हब चैनल रे केबे 100K हेबो जेते बेले आमे से भलिया परिश्रम करी कि समस्त आमे परिश्रम करिवो। प्रथम कथा द्वितीय कथा जेतेबेले हमर सब पिला जेतेबेले हमर सपोर्ट करिवे अधिक अधिक पिला जेतेबेले सपोर्ट करिवे आउ अधिक अधिक पिला सेतेबेले सपोर्ट करिवे जेते आमे अधिक अधिक सर्विस दे परिवो। आमे हमर लेवल रे भी ट्राई करछु। थैंक यू फॉर योर सजेशन। शुभम सुभद्रा गुड मॉर्निंग। पीटर सॉफ्टवेयर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओ हमें टिके क्विक रिवीजन करनबा। आग आमे कोन कोन पढ़छे हम जो देखिबा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल रे प्रथम हमर आसला कोन ना प्रथम हमर आसला लाभोसियर क्लासिफिकेशन लाभोसियर मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड किंतु एटॉमिक मास पर कोन आइडिया दे पार नथिले। डोबेरिन ट्रायड रूल जदि हम देखिबा डोबेरिन कोन करथिले एलिमेंट गुडा को ट्रायड रूल अनुसार सजीथिले आ सेकंड एलिमेंट रो एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड रो एवरेज सहित समान। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट आछि हमरो आटम तापर हमरो कॉन्सिक्वेंस थिला सब गुडा एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं नॉट एलिमेंट पे एप्लीकेबल आउ एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज नॉट इक्वल
not equally exact ରହିବ। ତାପରେ explanation about valency ଉପରେ କୌଣସି explanation ନଥିଲା। ତାପରେ କେକୁଲେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିଥିଲେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ on the basis of its tetravalency, but there was no explanation about arrangement of elements। element ର arrangement ଉପରେ କୌଣସି ଆଇଡିଆ ନଥିଲା। ଡିଚେନ୍ କୋଟ୍ରିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କ୍ଲାସିଫାଇ କରିଥିଲେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ on the basis of atomic mass, valency and in a cylindrical form, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି explanation ନଥିଲା regarding the recurring properties। Newland's octave rule was based upon your Indian classical music, and in which he found all the elements, that is the first and eighth position in an octave have equally same properties. Then it has only few elements were arranged, but there was no explanation about electronegativity, alkali metal character, on which Lauderdale has started his classification. In Lauderdale classification, he studied the behavior of atomic mass versus atomic volume, and he found that the topmost positions were occupied by alkali earth metal, and the bottom positions were occupied by the halogens. But there was no on the basis of this he arranged the elements, but there was no explanation about arrangement of the elements on the basis of atomic mass. Then further we move to Mendeleev classification. In Mendeleev classification, we have seen that it is a great milestone in the periodic table, and he grouped the elements one after another in the increasing order of atomic mass and recurring properties, depending upon which he made 8 columns known as 8 groups and 7 periods, right? And further he found after calcium that some elements have similar properties with the 1 to 8, so he again categorized 1 to 7 as 1a, 1b, 2a, 2b, etc. up to 7b. Then 8th group has been classified into 3 subgroups like this. Then there was a trick to remember different families and different periods also. Next, it was a great milestone in the discovery of new elements, study of elements also, correction of atomic mass. He corrected the atomic mass of beryllium, but there was a great consistency over periodic properties. He did not change on the basis of atomic mass, although there is an exception between tellurium and iodine, that iodine has less mass than tellurium, but still he placed iodine after tellurium because iodine has similar property with fluorine family. And position of hydrogen, position of isotopes, there was no explanation about metallic, non-metallic and metalloid property. Lanthanoids and actinoids, dissimilar in the same group. These were the demerits. Further, mostly in 1913, started the periodic table, and in his periodic table, what he did, that he just kept the atomic number concept. Instead of atomic mass concept, he used atomic number concept, and he told that the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. But there was no explanation about the again position of lanthanoids and actinoids. He didn't explain about the electronic configuration. Electronic configuration was not explained in details. Next one is your Charles Dunn's periodic classification. Basically, it emphasized on the arrangement of F block elements, that is lanthanoids and actinoids, but still there was a demerit that it was placed in between S and P, and there was no detailed discussion about gradation of properties. And finally, we have reached towards long-form periodic table, in which it says that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number as well as the electronic configuration. And accordingly, we have classified the elements on the basis of this. And 18th group, 7 periods. Further, on lanthanum and actinium, there was a projection. These are occupied by lanthanoids and actinoids. Group 1, different names have been assigned from group 1 to 18. Then we have discussed about the characteristics of a group. A group has similar valency, similar properties. Prediction of chemical formula can be known by knowing the formula of one element from the group.
different blocks are also there, SPDF. On the basis of this, S block has your group 1, group 2 are categorized, and they have valency 1 and 2, high, low ionization energy, melting point, boiling point. They give different colors when they are allowed to flame test. Then the hydrides of these metals are strong base, that is NaOH, KOH, etc. P block group 13 to 18 elements are categorized under P block. They include metal, non-metal, metalloids, and they have the covalent character rather than ionic. These have good reducing character also. In D block, it is your group 3 to group 12, and they form colored complex due to DDD transition, which you will learn in class 12. Then they have paramagnetic nature due to presence of unpaired electron generally. These elements have also catalytic activity, and in case of F block elements, they generally store the oxidation state of +3, and the lanthanide contraction and actinide contraction generally leads to decrease in basic character of hydroxides. They show both paramagnetic character as well as colored ions. Further, we had discussed the IUPAC, some rules to remember the IUPAC nomenclature of any element with any atomic number greater than 100. And we have discussed atomic size. When we move from top to bottom, atomic size increases. When we move from left to right, atomic size decreases. If we talk about the covalent, van der Waals, atomic, anionic, and metallic radius, van der Waals is the larger one, anionic, then atomic, then metallic, then cationic, and least one is the covalent radius. Effective nuclear charge, when you move from top to bottom, it increases. Left, right also increases. Ionization energy, the amount of energy required to remove the outermost electron of a neutral gaseous atom, basically neutral gaseous atom. So it depends upon different factors what we have read earlier. Then we had discussed that along group ionization energy decreases due to increase in atomic size, but in long period it increases, decreases accordingly, so on. Then successive ionization energy, if we remove one electron, one by one electron, then we will get the concept of successive ionization energy. So we have reached up to your पप्पू साहू पचारे मैंने सबिता पचारे तार पीरियडिक टेबल बनई से मेंडेलिव कि यस मेंडेलिव ही पीरियडिक टेबल से प्लस मॉडर्न पीरियडिक टेबल माने मु एडा आर माने या न जे मु मेंडेलिव जोडा करथिले से हाथ लेखाटा धरिकी आछि मेंडेलिव को पीरियडिक टेबल ता माने मेंडेलिव जोडा करथिले सेइडा ही मु एठे लिखि तांका हाथ लेखाटा तो धरिकी आसी परिबिनी मोर से साहस नाही ठीक अच्छे यस 12th क्लास करी ताल या पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखिबा 4 नंबर होची इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पिला माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आउ गोटे नार भी कुआ होची ता को होची इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने गेन कला बेले जहां एनर्जी रिलीज हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सो इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, right? अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी रे कौन होतिला ना हमें एनर्जी दउथिले इलेक्ट्रॉन बाहरथिला एडी कौन होची एडी हमें जेतेबेले इलेक्ट्रॉन दउचे से एनर्जी रिलीज करिवो तार उल्टा हबो सो हमें कौन कहि परिबा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an extra electron is added to a gaseous atom so गोटे gaseous atom रे एक्स्ट्रा गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड हबाकू ऐड हला बेले जति एनर्जी रिलीज होची ता कोन को आजिबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ता कोन को आजिबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक अछि जदि हमें फर्दर देखिबा ना मो मनर कहबी क्लोरीन अछि ठीक अछि क्लोरीन रे गोटे इलेक्ट्रॉन देली से कोन हबो क्लोरीन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रो वैल्यू होची
टू 20 किलोजूल पर मोल माने एतिकी हीट रिलीज हम ताने आम कहीपर डेलेस ऑफ द रिएक्शन ए रिएक्शन रो डेलेस केते हम ना माइनस रे आसीबो -20 किलोजूल मोल इनवर्स बुझा पड़ची डेलेस टा नेगेटिव हम कहीं ना एटा गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जेहेतु आम इलेक्ट्रॉन ऐड करछे सी आशीर्वाद दउछ तो आगडार मु कोन कहिथिली आगडार दीटा भल सांग थिबो से सांग दीटा भितर झगड़ा लगेकी ताको बाहर करवा अलग करवा किंतु एठे जने तम घर को अतिथि आसीथिबे क्लोरीन होची इलेक्ट्रॉन होची अतिथि क्लोरीन होची तम घर आ तमे कोन कल तांगर सेवा करबा द्वारा से तुमको आशीर्वाद देले हाथ टेकिकी आशीर्वाद देले आयुष्मान भव सेटा कहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर तापर हम जिबा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भितर किए आयुष्मान अच्छे कि आमर गोटे स्टूडेंट अच्छा आयुष्मान फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गुड मॉर्निंग स्मृति रंजन तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन फैक्टर रही जो गुड़ाक कि अफेक्ट करे सर मते केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगुच केमी पढ़ले टे इजी लगे सबू जिनस कंसिस्टेंटली पढ़ले ही इजी लगे सबू जिनस को रेगुलारली पढ़ले ही इजी लगे बिनाभ्यास विषम विद्या प्रकृत कथा हूँ अभ्यास न कले सब जिनस विरक्ति लगे आ हार्ड लगे कि जो अभ्यास करवा थरे करदेव ना सब जिनस सहजटा भी जो थोड़े अभ्यास कर टाइम दब सब किसी संभव आम प्रकृत में पढ़ुने पढ़ा इच्छा करूने तेणु आमको एमती लगुच थरे होनी आउट थर पढ़ो ये चलो अंटिल यू गेट ए कंसिस्टेंट रिजल्ट एटॉमिक साइज अच्छा मत कहल जो छोट इलेक्ट्रॉन दबा आ गए बड़ इलेक्ट्रॉन दबा ठीक अच्छे ध्यान देकी देख ठीक अच्छे सविता कौन कर लाइक शुभम कहले सर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ठीक ठीक शुभम कहले ये चैप्टर आप पढ़ाब किंतु एते डिटेल्स रे पढ़ेबी नहीं मुझको दीटा क्लास रे चैप्टर को सारी किंतु आप पढ़ेली जो पढ़ेबी नहीं कहबी पढ़ेबी ये गोटे इलेक्ट्रॉन देवी ये गोटे इलेक्ट्रॉन देवी मत बर्तमान कह कौटी अट्राक्शन टा भल हम सान आटम ना बड़ आटम छोट आटम रे ना बड़ आटम रे कौटी इलेक्ट्रॉन को सी इजिली अट्राक्ट कर भल भाव अट्राक्ट कर कौटी इलेक्ट्रॉन को भल भाव अट्राक्ट कर स्मॉलर आटम सो ये कौन कर मोर अट्राक्शन हेले कौन है संबलपुरी किंग थैंक यू स्मॉल आटम एटा लेस अट्राक्शन तम घर को अतिथि आसिले तम घर को अतिथि आसिले ध्यान देखी शुण अतिथि आसिले हेले अतिथि कहा ऊपर बेसी खुशी हेबे जी तांको भल भाव स्वागत सत्कार करियो ना जी अतिथि आसते बिस्कुट मिक्सचर देकी विदा केमती करेबी से भाया भावुथिबो जी बेसी आकर्षण बा बेसी तांको प्रति आप्यायन करियो ना जी कम आप्यायन करियो काहा को बेसी आशीर्वाद देबे तमें भी बेले बेले कर अतिथि आसती खाली बक 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 हो कम खादा किसी ना पलि आसते पलि आस घर को किमिति जीव बिस्कुट मिक्सचर टिके देकी छाड़ीदे विदा करदे आ भल अतिथि होते छणा भजा पिठा मालपुआ मिठा छेनापोड़ एटसेट्रा एटसेट्रा आसो आदि अतिथि भल नथिबे माने पसंदर नथिबे किसी आसोनी बिस्कुट मिक्सचर टिके सुखिला सुखिला मिक्सचर टिके देगी पानी ग्लास देगी ना किसी तो देगी विदा कर कथा एमती बर्तमान मत कह को अतिथि कौटी अतिथि बेसी खुशी हे कौटी अतिथि बेसी खुशी है आशीर्वाद देवे किंतु हाँ सी गोटे समभावापन्न अतिथि ही नथिबे समभावापन्न अतिथि होते राग द्वेष सब किसी सामान लगे सुखेशु अनुद्विग्नमना दुखेशु विगत स्पृह बीतराग भय क्रोधा स्थितधि मुनिरुच्यते गीतारे कहे ना जे सुखरे भांगी पड़ेनी दुखरे भी भांगी पड़ेनी सी ही
शीत प्रज्ञ ही थाए। बर्तमान मते कुह अतिथि बिस्कुट मिक्सचर आनिछन्ति कि नै देखिବାକୁ पड़िबो। शुभम कहले अतिथि बिस्कुट मिक्सचर आनिछ कि नै देखिବାକୁ पड़िबो। जदि बिस्कुट मिक्सचर आनि नांती ताले ताकू कहबाक अछि आग जान आपण आनिबे तापर आमे खाइबाक देबा। तो जोडे मोर अट्रैक्शन थिबो सेडे अधिका एनर्जी रिलीज हबो। So the more energy will be released. The more energy will be released. एठी लेफ्ट साइड रे लेस एनर्जी नाही। बुझा पड़ला कॉन्सेप्ट। सेटा झगड़ा लागिया कॉन्सेप्ट, एटा अतिथि आसिया कॉन्सेप्ट। शुभम भारतीयार एथरो जानि था पिला माने शुभम भारतीया जदि केतेबेले इनवाइट कला ताको बिस्कुट मिक्सचर गोटे 5 टंकिया बिस्कुट 5 टंकिया मिक्सचर 10 टंकिया मिक्सचर देगी पळेबो। नहले नहले सी तमर आपे आदर करिवनी। तो आमे देखिले जे जेते बड़ साइज होची सेते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाउची। तो कोन लिखिबा ना मोर द एटॉमिक साइज, मोर द एटॉमिक साइज, जेते एटॉमिक साइज बड़ होची less is the attraction, less is the attraction towards nucleus. Less is the attraction towards nucleus. More the atomic size, less is the attraction towards nucleus. हेले कौन न्यूक्लियस आड़ को अट्रैक्शन आसिले तापर कौन हम एटॉमिक साइज जिते बड़ होची ताहले सॉरी हाँ ताहले लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेस विल बी द electron affinity, less will be the electron affinity. So we can say that electron affinity is inversely proportional to your atomic size. But remember electron affinity माने केवल और केवल एनर्जी रिलीज हवा कांसेप्ट को एनर्जी रिलीज हवा कांसेप्ट को हमें कौन कहबा ना एनर्जी रिलीज हवा कांसेप्ट को हमें कौन कहबा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिते अधिका एनर्जी रिलीज होची सेते एई वैल्यूटा नेगेटिव आसीबो। किछि किछि बुक रे तमे माने देखिथिबो किछि किछि बुक रे लिखाइथिबो लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बदल रे एठी लिखाइथिबो मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर विल बी द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो सेटा को नेकी कंफ्यूज जमा हबनी। कोन कहला मोर विल बी द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटा कहला लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गोटे जगह तुम पाइबो मोर विल बी द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक अछि ताले हमें कोन हबा एठु हमें कोन बुझिबा जे जेतेबेले हमर कोन होची जेतेबेले हमर मु टिके कंसंट्रेट कर पलेनी जेतेबेले हमर एटॉमिक साइज बढ़ी जाए सेतेबेले हमर अधिका एनर्जी सॉरी गोटे जितेबाला आमर एटॉमिक साइज बढ़ी जाए सेतेबाला आमर बहुत कम एनर्जी रिलीज हुए राइट कम एनर्जी रिलीज हुए सो लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट मोर विल बी द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो आमे सेही कांसेप्ट मुंड रे पसेइबा नाही आमे ए भलिया ही बुझी की जीवा। ठीक अछि जोडा मु बुझेली जे एनर्जी रिलीज हवा से कथाटा बुझी की जीवा। तापर आमे नेक्स्ट जीवा एटॉमिक साइज पर 2 नंबर कांसेप्ट को जीवा। कौन 2 नंबर कांसेप्ट अच्छी तो किसी किसी बुक रे भलिया कंफ्यूजिंग कला भलिया टॉपिक थिबो तो ताकू नजरअंदाज कर दो तो तमे देखिबो केते एनर्जी रिलीज होची एनर्जी रिलीज हवा पार्टडा अधिका ही जीवो। तापर आसी न्यूक्लियर चार्ज वर्तमान मते को न्यूक्लियर चार्ज दीटा कांसेप्ट अच्छी गोटे हाई न्यूक्लियर चार्ज आ गोटे स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज। मु संबलपुरी किंग जी अछंती तांको पचारिया को चाहूची जेते न्यूक्लियर चार्ज अधिका हबो सेते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिका हबो ना कम हबो। Effective nuclear charge or nuclear charge also we can say it is nuclear charge also Shubham।
न्यूक्लियर चार्ज जेतेबेले बढ़िबो सेतेबेले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन हबो? पिला बेसी नाहंती। हम्म तो आम जदि देखा न्यूक्लियर आमर कौन हो न्यूक्लियर चार्ज जिते बढ़िबो अच्छा मते कह न्यूक्लियर चार्ज जिते बढ़िबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेते कौन हबो बढ़िबो कि कमिबो सेम कांसेप्ट को बेस करिवि नले मु किछि एग्जांपल देकी बुझेबी। तो सुभाषिष कहले कमिबो शुभम प्रथमे कमिबो कहिथिले तापर बढ़िबो कहले स्मृति कहले इंक्रीजेस बढ़िबो ताहले आमे जदि देखिबा न्यूक्लियर चार्ज सपोज एठी 16 टा प्रोटॉन अछि एठी 12 टा प्रोटॉन अछि प्रोटॉन जेते अधिका हबो सेते से इलेक्ट्रॉन को टाइटली टाणिबो सो एठे मोर अट्रैक्शन हबो राइट एठे मोर अट्रैक्शन हबो एठी लेस अट्रैक्शन हबो कारण एठी कम प्रोटॉन रहिछि प्रोटॉन जेते कम रहिबो अट्रैक्शन सेते कम आसीबो प्रोटॉन जेते अधिका हबो अट्रैक्शन सेते अधिका हबो अट्रैक्शन जेते अधिका हबो सेते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अधिका हबो सो मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो अट्रैक्शन जेते अधिका हबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेते अधिका हबो अट्रैक्शन जेते कम हबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेते कम हबो दिस इज द कांसेप्ट क्लियर बुझियला so more the nuclear charge very good more the nuclear charge more will be the electron affinity more the nuclear charge more will be the इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जिते बेले आमर न्यूक्लियर चार्ज अधिका हबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन हो अधिका हबो ठीक अच्छे 3 नंबर पॉइंट को आसीबा आमर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी तापरे एबे तो अतिथि गोटे प्रकार देखिलो आउडे अतिथि एबे देखिबा आउ जन घर को अतिथि दिबे सी मते से किए गोटे कहले सर आपण बेकार कहउछन्ती बेकारिया कथा गोटा कहीं भीतर पुरौछन्ती ए किए कहले कहू आमर अतिथि घर को जिबे जाइकी बुलिकी आसीबे जहा हो जाउछ नहीं कि किए कौन कहले कहू न नहीं आमर अतिथि किंतु जिबे जाइकी बुलिकी आसीबे हेले दी जन घर को अतिथि जाइछन्ती देख चिंता कर दी जन घर को अतिथि जाउछन्ती जणे होउछन्ती सरकारी चाकरिया चाकरिया जणे गोटे होउछन्ती एम्प्लॉय तांकर ऑफिस आवर होउछि 9टा एम रे ठीक अच्छे अतिथि ठीक आसिकी 9टा बेले आसिकी पहुँचले सी कौन करेंगे हाँ आज्ञा आसिले तो भल कले 8टा 50 को आसवे हाँ आज्ञा आसिले तो भल कले हो कालिकी आसतु टे कथा हाँ एबे तो मुझे जीवी ऑफिस ना संडे देखिकी आसतु डायरेक्ट कहीदेवे संडे देखिकी आसतु माने इच्छा थाउ बा न थाउ किंतु सी रखिपारे ना कारण ये हूँ ऑफिस एम्प्लॉय वाला जदि डेरी करेंगे सेपटे चाकरी कटिज किंतु ये नॉर्मल गोटे बिजनेसमैन बा जे भी हेले तांको फैमिली मेंबर अछंती यांकर फैमिली मेंबर किए ना ये एक बड़ा विशिकेशन माने ऑल इन वन से सब किछि घर संभालंती निजे ही सब किछि स्त्री भी धर जॉब करछंती दी जन जाक जॉब पई हस्बैंड वाइफ पळैले अतिथि माने तो बिना तिथि रे जे आछंती से होछंती अतिथि ना पळै आसिले कहले हो भल अछंती आ हो ठीक अछि आउ थे के आसतु रविवार देखिकी आसतु आसिले रोषेईबास कर खियापिया करवा जी हम किंतु एठी किसी गोटे फ्री लोक जी गोटे नॉर्मल लोक से कौन कर जिते इलेक्ट्रॉन आसवा जिते सॉरी अतिथि आसवे सी पूरा खुशी हो आसतु 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 पूरा आप्यायित करेंगे तो ये अट्राक्शन अधिका है ये अट्राक्शन पूरा कमीगला अट्राक्शन है जमा ये जमा अतिथि को आप्यायित ही कले सो ये अतिथि आप्यायित ही कले अतिथि आसो कौन आ कौन अतिथि आसवा पूर्व हो आउ थे के आसते रविवार भल लगे खुशी लगे कहीं गोटे मिनिट देकी टाइम देकी पलैबे कारण ऑफिस आवर अच्छी तो ये इलेक्ट्रॉन आवर एक्सेप्ट करेंगे अतिथि आसिले सीना
କିନ୍ତୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସିଏ एक्सेप्ट କଲେନି କିଏ एम्प्लॉय वाला नॉर्मल लोक एक्सेप्ट कले जो माने नॉन एम्प्लॉय थिले से टाइम रे आसले रे नांगर ऑफिस जे टाइम हेला तेनु ये एक्सेप्ट कलेनी तो ये एक्सेप्ट न करिवारु अतिथिंगर आशीर्वाद भी मिललानी अतिथि भी आसिलेनी तो एटा हेगला जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने माने कोन माने होतनी फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल तो जो माने फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल थांदी से माने केबे भी हेले इलेक्ट्रॉन नबे नाही जहा ही जाउत ना काहे कि से माने इलेक्ट्रॉन नेबा को केबे भी हेले चाहिबेनी तेनु एमानकर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब बेले जीरो बुझियला तो फुलफिल्ड हो कि हाफ फिल्ड हो स्टेबिलिटी जदि रहउची स्टेबल रहउची देन इट विल हैव द जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जदि बेसी माने से माने बेसी दूर रु आस्तिबे धर दूर रु अतिथि आसीथिबे आ तांगु तो कहि दवनी जे रविवार देखि आसीबे सी आसीथिबे गोटे गोटे 50 किलो सॉरी गोटे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर रु आ तांगे सी को कुआर जिबे गोटे निहाती से जदि आसीबे तांको निहाती भाबे जिबे घर खोलिबे घर खोलिकी आज्ञा बसंतु आ कौन पियंतु तापर का गोटे जगेबे घर जगेई तांगर व्यवस्था करेगी सी जिबे अतिथि कहे हो ठीक अच्छे चलो तो ये बहुत कष्ट होची ठीक अच्छे ये बहुत कष्ट होची सो ये आम कहीपर जे जदि होची केबे केबे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किंतु पॉजिटिव हबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हबो पॉजिटिव हबो माने कोन एनर्जी देगी अतिथि आसिले सिना अतिथि लोक लगेगी तांग निजर निजे सत्कार करिया पड़छि बा बाहर को खाइबा पीबा व्यवस्था है नथियो बाहर को जाइकी खाइया को पड़छि केवल आसिक शोचंदी ए भला व्यवस्था करिया पड़छि अतिथि को निजे खर्च करिकी निजे निजर आप्यायित करिवे तो से भला आमे भी इलेक्ट्रॉन को जेतले दबा आमे हमको एनर्जी भी दबा को पड़ियो ता सहित तो सेतमे एटे कोन हिजो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हिजो नेगेटिव बदल रे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ता पॉजिटिव हिजो माने एनर्जी हमको दबा को पड़ियो एनर्जी आ रिलीज हबनी एनर्जी हमको दबा को पड़ियो जेतले हमर स्टेबल हि थाए तो स्टेबल थिले बेसिकली इधर जीरो आसीबो नहले पॉजिटिव हबो किनु नेगेटिव हबसिबार चांस ही नहीं बुझियला माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बा एनर्जी केबे रिलीज हबो ही नहीं इधर सी जीरो रहइबो नहले ये करियो सुभाषिष कहले नहले दुर्वासा ऋषि अभिशाप भली अभिशाप देवे बहुत सुंदर बढ़िया दुर्वासा ऋषि अतिथि सत्कार करिकी जने आप्यायित करथिले जने अतिथि सत्कार न करिकी भी आप्यायित करे दिथिले दी जन जानछ दुर्वासा ऋषि अतिथि सत्कार करिया पई आप्यायित करिया पई रहिकी दुर्वासा ऋषि निजे हैरान रे पड़थिले गोटे होचंदी राजा अंबरीश जी राजा अंबरीश को जेतले दुर्वासा ऋषि जेतले जाइथिले तांकर राजमहल को राजा अंबरीश कहले आपण आसिले एते सुंदर हमर अतिथि सत्कार करंदु अतिथि चर्चा रे ग्रहण करंदु दुर्वासा ऋषि हां कले सी ये जाइछन आंकर पारणा समय पळै गेला एकादशी रे गोटे विधान थाए पारणा बोली पारणा समय पळै जिवारु दुर्वासा मुनि कोन कले दुर्वासा मुनि आसपारे डेरी होगा सी स्नान शौच सब सारिक आसवे स्नान संध्या तर्पण इत्यादि इत्यादि जहाँ जहाँ रही कर्म किंतु एपटे आंकर डेरी हो जाऊँ पारणा ये कौन कले भगवान नारायण को स्मरण कर जल तुलसी पाइगले हाँ मत न देगी तमें कौन आपको जल तुलसी तमें निजे पारणा करदेला कहीकि दुर्वासा मुनि निजर अंगरू गोटे राक्षसी को जप्त कले कृत्या बोल सी खाइबा गला आड़क सी जलीगला आउ संगे संगे सुदर्शन चक्र भगवान विष्णुଙ୍କର बाहरला आ दुर्वासा मुनि पछरे गोड़ेला दुर्वासा मुनि चतुर्दश ब्रह्मांड बुलला पर भगवान विष्णु मध्य रक्षा कर पारे शेष में पुणी अंबरीश जार रक्षा करते तो दुर्वासा मुनि एभली जनक घर को जाइए किंतु अतिथि होगी जाइए किंतु भल भाव से अतिथि चर्चा निजे एका अतिथि भल भाव हो पारे निजर ही किसी भूल जो ये दंडित हेले अतिथि होगी आ गोटे जगह न खाई अतिथि होते न खाई न ये करी संतोष होगी पलैले सी होती द्रौपदी पाखे दी जन ये दुर्वासा आउ तो भगवान श्रीकृष्ण भी श्रीकृष्ण को भी से आशीर्वाद देते कुंती को भी आशीर्वाद देते दुर्वासा ऋषि ये महाभारत वर्णना रही से जा हो तो आमर ये बुझे आम समस्त सब फुलफिल्ड जो मैंने रे से स्टेबिलिटी रही जाए
तेणु इलेक्ट्रॉन दबा बा इलेक्ट्रॉन दबा से भारी मुश्किल तो से माने इधर 0 रहिबे नहले पॉजिटिव रहिबे तो हमें कौन लिख परिबा ना the half filled and fulfilled the half filled and fulfilled stable atoms the half filled and fulfilled stable atoms generally do not accept electrons don't accept electrons इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती ही नहीं रेदर से कौन करती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती नहीं जदि so they have either 0 so they have 0 electron affinity सेमानकर इलेक्ट्रॉन affinity 0 in some cases किसी in some critical cases to accept electrons they require energy किसी केस रे एनर्जी रिक्वायर करनी को माने हाफ फिल ऑफ फुल स्टेबल एटम माने hence they have positive hence they have also positive electron affinity तेणु एमानकर इलेक्ट्रॉन affinity भी बेले बेले पॉजिटिव थाए क्लियर तापर हमें वेरिएशन देखिबा वेरिएशन माने हमें टॉप टू बॉटम कोन हबो आ बॉटम आ हमरो लेफ्ट राइट कोन हबो अच्छा मते सहजरे तुम माने बुझिथिबो जे टॉप टू बॉटम जदि हम मूव करबा तुम्हारा इमेज एटॉमिक साइज बढ़ुची हेले कोन हबो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम मूव कले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोन हबो को तापर सक्सेसिव तापर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो डिफरेंट स्केल आ बढ़ले चारिडा तीनटा क्लास लागिवो आ तीनटा क्लास लागिवो YouTube रे चैप्टर सरिया पय स्मृति सुश्री गुड मॉर्निंग आसुची सुश्री तमानर क्लास करियो सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम जेतोले मैं टॉप टू बॉटम मूव करू कौन हुए ना इलेक्ट्रॉन affinity decreases when you move from left to right it varies accordingly माने केतोले कमी थाए केतोले बढ़ी थाए केतोले कमी थाए केतोले बढ़ी थाए तो आमे जदी गोटे देखिबा हां when we move from top to bottom electron affinity decreases but गोटे एक्सेप्शनल केस रही फास्ट रूल रो कोन ना फ्लोरीन फैमिली बा हालोजेन फैमिली रे गोटे एक्सेप्शनल रही in case of halogen family the electron affinity order is as follows कौन रही ना सब हाईएस्ट फ्लोरीन हवा कथा जदि देखा छोट एटम ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो सब हाईएस्ट फ्लोरीन हवा कथा सब हाईएस्ट एक्चुअली फ्लोरीन तापर आछि फ्लोरीन तापर आछि ब्रोमीन पर आछि फ्लोरीन पर आछि आयोडीन जदि एभला देखिबा
तो सबुठु हाईएस्ट आसछि क्लोरीन एज कंपेयर टू माने क्लोरीन हवा कथा एक्चुअली ऑर्डर टा केमि हबो सबुठु हाईएस्ट क्लोरीन तापर ब्रोमीन तापर आयोडीन किंतु होउछि कोन ना फ्लोरीन टा ए पछकु पळौछि पूरा माने क्लोरीन ब्रोमीन रु भी तार वैल्यू कमी जाउछि तो आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा आ तार रिलेटेड ग्राफ भी देखिबा एटा काहे कि होछि कोन पई आम एटा देखिबा ए एक्सेप्शन टा को डिटेल्स रे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ओके आशा करछि वीडियो समस्त को भल लागि थिबो जदि काहा को काहा मनरे किछि कष्ट हेतिबो बा काहा किछि आघात होला वाला कथा जदि इथु जणा पड़थिबो तेनु क्षमा प्रार्थना करछि तेनु शेषरे हो थैंक यू चलो आसंता काली पुणी पढ़िबा क्लास जेतु 12th रो भी क्लास होछि आसंता काली पुणी देखाबा ठीक एई समय रे जदि हबा आ टिके आगुरु नले नै पीरियड रे हमरो सेकंड पीरियड ही इंपोर्टेंट अछि तो चलो हैव ए गुड डे वंडरफुल डे